Artificial intelligence definitely is there, it's growing, but it can't compete with human technology, or we'll say the human brain, which itself is an amazing technology created by God. Hi, I'm Nazia and welcome to another podcast series of Career Compass Navigating the Future. दोस्तों देखा जाए तो हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन के साथ रिश्ता काफ़ी पुराना है. चाहे बात हो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, चाहे बात हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, फिर आया डिजिटल रेवोल्यूशन और आज का दौर है एआई का. एआई एक बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है. तो आज हम इसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि डीन है ऑपरेशंस एंड क्वालिटी एंड शी इज़ कोमल नंदा बेग. पहले आपको वेलकम कहूँगी. Thank you so much, Nazia. It's a pleasure to be here with you. थैंक यू सो मच. और हमारे साथ मौजूद हैं रीम आलम. सो आपको भी वेलकम कहूँगी. थैंक यू. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एआई रेवोल्यूशन इन एजुकेशन. सो एक्सपर्ट से इसी बात पर हम यहीं से शुरुआत करेंगे. आपके हिसाब से एआई रेवोल्यूशन इन एजुकेशन को आप किस तरह से समझती हैं और एक्सप्लोर करने को सोचती हैं? First of all, I would say that ये एक बहुत ही relevant topic है and this is something that needs to be discussed from an academic point of view. हम सोचते हैं कि AI जो है एक नया concept है education में. But I would just like to rewind and I would like to tell everyone कि कुछ tools जो हम AI के academic setting में use करते हैं वो काफ़ी पुराने हैं. हम सोच रहे हैं कि AI is the new thing. It's of course it's a buzzword. It's in trend and everyone is talking about AI right now. But academic point of view से अगर मैं बोलूँ तो एक जो major plagiarism tool जो हम एक academic setting में use करते हैं वो है Turnitin for example. अगर मैं Turnitin का example दूँ तो Turnitin is not something जो आज आया है. Turnitin is already in existence from 1998. और ये actively used plagiarism tool है जो most of the universities in the globe they are using this and इस tool को हम use करते हैं to identify any malpractice, to identify any kind of plagiarism in the students' work. मैं अपने point of view से बोल सकती हूँ because I'm working as a quality and मेरा खुद का role effectively ये है कि I need to ensure that academic standards and quality is in compliance with the requirements of the awarding body. So I would say कि हमारा main role यही होता है कि students को हम educate करें कि इन tools को हम effectively कैसे use कर सकते हैं और हम academic integrity और standards को कैसे maintain कर सकते हैं. Right. Now coming to you, Reem. Reem, आप क्या बनना चाहते हो? I aspire to be a doctor and my future plans is to do medicine inshallah. Wow, great. तो ये आपकी अपनी खुद की चॉइस थी या फिर कहीं ना कहीं किसी से आप इंस्पायर्ड हुई या फिर पेरेंट्स की तरफ से आपको एक प्रेशर था कि डॉक्टर ही बनना है? I wouldn't say there was any pressure because my parents always gave me the freedom to choose whatever I wanted to be. But there comes a phase in every student's life where they don't really know what they want and your parents just guide you. They're not forcing you, but yes, they guided me towards a path. I was unsure if I ever wanted to be a doctor, but I feel like that guidance, all that hard work, it just turned out to become my passion. And yes, I do want to become a doctor, so no, it wasn't. It is my choice independently and I was not pressurized. वाओ ग्रेट. अच्छा कोमल, अभी आपने बात की कि किस तरह से जो है बच्चे इसको, अच्छा भी मैं रिसेंटली कहीं पढ़ भी रही थी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो स्टूडेंट्स ने ही किया इसका इन ऑर्डर टू एआई का इस्तेमाल किया है कि अपने सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए. तो किस तरह से क्या एआई बच्चों को पुश कर रहा है टुवर्ड्स डिसऑनेस्टी? हम इस स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते. हमें इसको एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा. And again, it is very very important कि not only at the school level but also at the university level कि हम students को educate करें कि academic misconduct से बचें और उनके अंदर इस confidence को instill करें कि that they are capable of much more. दूसरी चीज़ ये है कि it is very very important to understand कि जब हम students को orientation देते हैं और जब हम students को induct करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि CUC अल्स्टर यूनिवर्सिटी में जब हम एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में हम इंडक्शंस करते हैं, हम ओरिएंटेशंस करते हैं, हम स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि एकेडमिक मिसकंडक्ट क्या है एंड प्लेजरिज्म क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है एक एकेडमिक सेटिंग में कि आप एकेडमिक इंटेग्रिटी को मेंटेन करें.
So I would say that it is very important in this era for the students to be using the AI tools, because ये important है understand करना कि after all AI tool है क्या. AI tool could act as your assistant, you know. It can help you manage your time, it can do some analysis for you, but critical and cognitive thinking तो student को खुद ही करनी चाहिए और खुद ही करनी पड़ती है in fact. अभी हमारा, although it is revolutionized, we are saying academic setting is revolutionized with AI, but I would still say it is still far from the fact कि assignments जो है वो totally students जो है AI से करवा सकते हैं. I would still say कि अभी भी students को even if they are using the AI prompts तो student को ही देने पड़ेंगे, but of course the most important thing is to educate the students to understand how to use this AI tool effectively and to not allow it to affect your cognitive ability, because ultimately ये balance important है, because we do not want a society where children or students are not using their grey matter. अच्छा, AI का जो इस्तेमाल है इसको किस तरह से सोसाइटी के हर तबके के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सकता है? ये बहुत ही relevant question है और बहुत ही this is something that all of the policy makers need to address. मैं आज सुबह ही Google कर रही थी, I was trying to find out कि is Wi-Fi available everywhere, and I was astounded. I wouldn't like to take the names of the countries, but आप खुद Google पे जाके सर्च करें, आपको पता लगेगा कि टेक्नोलॉजी में भी कितनी डिस्पैरिटी है, कंट्रीज में कितनी डिस्पैरिटी है. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से तो हम डील कर ही रहे हैं, बट इवन टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटी is a menace. It's a problem because there are some countries who are very fortunate to have access to technology because of their own economic standing, and then there are those countries जहाँ पे Wi-Fi भी नहीं है. And this disparity is actually very worrying for the society as a whole, because कुछ students के पास complete access है to technology, and then there are some students who are even devoid of a basic 4G or even a Wi-Fi access. Children or students out there who have no access to Wi-Fi and hence are limited to a proper sustainable learning environment जो हर कोई हकदार है उस चीज़ का. अच्छा रीम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि AI आपकी लाइफ में कब इंट्रोड्यूस हुआ? I remember AI being introduced into my life in the beginning of year 11, and I wasn't completely aware of it, and I didn't really pay much attention to it, so I don't know how to effectively use AI. And basically in the standard of learning which we learn in, we don't really use AI. We're more of, the Indian education system. It doesn't really require the use of AI, but sometimes when I had to write speeches, like for example for any extracurricular, I would take the help of AI. I would just type that I need this, and it would help me a lot. I agree with what Ms. Komal said, that it is a tool and it is really up to our hand to use it efficiently, and we have to really recognize that it is a technology and we must ensure that we use it to serve a greater good for us. आपको लगता है कि टीचर्स के लिए बड़ा थ्रेट बन जाएगा, बिकॉज अभी बच्चों को सब कुछ तो AI टूल जो है वो बता ही रहा है, गाइड भी कर रहा है, बहुत हद तक मैंने देखा वीडियोस हैं वो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो फिर आप टूल की हेल्प से उन्हें ब्रीफ भी कर उनका ब्रेक डाउन कर सकते हैं एवरी सर्टन सॉर्ट ऑफ थिंग. ऐसे में टीचर्स का रोल आने वाले टाइम में क्या रहेगा? क्या वो प्रॉम्प्ट राइटिंग ही सिखाएंगे कि एक क्लासरूम सेटिंग में सिर्फ कंटेंट or student important nahi hai. It is not just limited to that. It goes beyond the teaching and learning. It goes to empathy, it goes to sympathy, it goes to compassion, it goes to understanding the need of every student. ये कोई एक mantra नहीं है it's not one single formula that will work for everything. So I have a question to you. अब जैसे humans की एक intelligence है, Likewise, artificial intelligence को भी मैं कहूँगी उनके पास भी एक varied level of IQ है. अब जैसे ChatGPT है, I would say जो जैसे आपने बोला कि उसका unpaid version, it has a low IQ. अब जो paid versions हो जाते हैं उस artificial intelligence का higher IQ है. But again, when it comes to the emotional intelligence, हम IQ की बात कर सकते हैं, हम artificial intelligence की बात कर सकते हैं, but क्या वो हम empathy ला सकते हैं जो एक educator एक classroom environment में लाता है? My big answer is no. तो वो जो compassion है, जो वो passion है, जो वो empathy है, वो sympathy है, वो understanding the mind of the student,
I think there is no replacement to that. And in fact, this morning I was also looking at the word artificial. Artificial का meaning क्या है? अगर आप dictionary meaning देखें artificial का, तो it tells us something that is created by humans. So when it is created by humans, it's something that we are creating with our own hands. How can it go beyond the cognitive and the emotional ability of humans? So I think I'm very clear in my head कि जब हमें comparison करना है, artificial intelligence definitely is there. It's growing, but it can't compete with the human technology, or we'll say the human brain, which itself is an amazing technology created by God. Okay, तो सब टीचर्स को आपने सेव कर लिया अच्छे से 100%. अब मैंने अपने आप को भी सेव कर लिया. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, कौन सी की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द फील्ड ऑफ एआई? One of the things, जैसे हमने prompt की बात की, I think that is very important from a usage point of view. But if someone wants to excel as a professional, अगर आप, if I have to rephrase the question, अगर मैं ये कहूँ कि मतलब इसके लिए skill क्या चाहिए, जैसे हमारे यहाँ खुद we have a program of Bachelors of Engineering in Artificial Intelligence, तो इन students को they've got to have a good understanding of mathematics, and they've got to have a very good understanding of the programming languages. So ये एक basic requirements हैं for anyone who wants to be an AI professional, people who want to go into the field of development of AI. I would like to ask certain questions about artificial intelligence. Go ahead, Reem. The first question I would like to ask is, how can we use artificial intelligence to detect and prevent academic dishonesty? हर यूनिवर्सिटी, हर एकेडमिक सेटिंग में इन टूल्स को इनकलकेट किया जाता है. स्टूडेंट्स जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो हम उसका जो असाइनमेंट लिंक ही होता है वो ही टर्निटिन के थ्रू करते हैं. तो जब टर्निटिन पे सबमिशन जाती है तो टर्निटिन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है प्लेजरिज्म. It flags off any work which is not referenced and cited. So normally हमारी यूनिवर्सिटी में तो हम हार्वर्ड रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं. तो अगर हार्वर्ड रेफरेंसिंग अगर स्टूडेंट ने नहीं यूज़ किया है प्रॉपर्ली, साइटेशन नहीं किया है, तो वो एक सिमिलैरिटी स्कोर दिखाता है. हम अपनी इंस्टीट्यूशन में हम इंश्योर करते हैं कि देयर शुड बी सिमिलैरिटी स्कोर ऑफ नॉट मोर देन 20%. So anything which is above 20%, we have to fail that student. But of course, we don't totally rely on Turnitin, because just because Turnitin ने हमसे कह दिया कि 20% similarity score है तो हम उसको straight away fail कर दें. Human intervention is important. That going back to the fact that balance is important. तो एक machine ने हमें एक चीज़ बता दी, एक tool ने हमें एक चीज़ बता दिया, उसके बाद हम एज एजुकेटर्स एनालिसिस करते हैं कि क्या जो Turnitin ने हमें जो रिपोर्ट जनरेट करके दी है, इज़ इट करेक्ट, उसमें कोई algorithmic bias तो नहीं है. So for that, human intervention is very very important, and we see कि from an objective point of view कि student का काम वर्दी है, is it up to the academic standard that is required for that module. वर्क प्लेस की जो प्रोडक्टिविटी है उसे तो डेफिनेटली आई इंक्रीज कर रहा है, बट समहाउ ह्यूमन की क्रिएटिविटी को किल कर रहा है. सो व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस? Definitely, I think creativity को definitely reduce कर रहा है, because I think we're so dependent on this technology that the human body and the human brain is very adapted to going the easier path. So automatically हमारा brain हमें बोलता है let's take the easier route. So definitely I think over the period of time जो एक major challenge होगा हमारी society के साथ, वो यही है कि creativity is definitely going down, and there'll be this prototype creation जो हर कोई create करेगा through artificial intelligence. Okay, so now how would you like to conclude this topic, and students को क्या message देना चाहेंगे? Students को मेरा एक बहुत ही strong message है. If I have to put it down in 3 points, number 1, to recognize that you are the future of society and you're the future of this human race. अगर एक मैं बहुत ही umbrella point of view से बोलूँ, so it is very important कि ये जो अभी current generation of students हैं and जो coming generation of students है, you are the flag bearers, and it is very important कि आप इस value को carry करें अपने अंदर कि academic integrity is very 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 important. To recognize the difference between misconduct, plagiarism, and to act in the most diligent way to achieve your academic goals.
बिकॉज ये एक आपकी लर्निंग स्टेज है. अगर यहाँ पे आप फॉल्टर करेंगे it will be a habit. You know, we say कि 40 days अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करें then it turns into a habit. अंडरग्रेड प्रोग्राम ऐसा है जो 3 years का होता है, 4 years का होता है. इन 4 years में अगर आप if you build yourself as students who are not recognizing the difference between academic misconduct and integrity, then this is something that you will carry on for your life. The second thing is, I would say, use AI. It's very, very important. Use it as a tool, use it diligently, use it efficiently. And point number 3, I would say, strike a very good balance of using your own cognitive ability with AI, to use it only as a tool to support you, but not to overtake you. So those are my 3 advices to the current generation and the future generation. वाह, बहुत ही खूबसूरत एडवाइस आपने दी हमारे स्टूडेंट्स को. एंड रीम, आपका इस पूरे कन्वर्सेशन का बेस्ट टेक अवे क्या था? The best takeaway of this entire conversation would be that AI is a technology and it is up to us to use it efficiently. And the one thing which Ms. Komal said, that there are different types of intelligences. There's creative intelligence, technological intelligence, and emotional intelligence. And we humans possess the emotional intelligence, which is a very important factor in conversing with people, in understanding people, in putting the other person in your own shoes, which AI could never do. So I don't think that AI will overpower humans. And I think that to everything you shouldn't go to the extremes. Extremities of anything is not nice. So you should always have a balance of cognitive intelligence, your emotional intelligence, as well as with AI. बहुत ही अच्छा जवाब. आई थिंक बहुत ही अच्छे से समझा इस टॉपिक को भी हमारे स्टूडेंट ने. सो वेल, विद दिस मैं तो यही कहूँगी कि हमें बिल्कुल नहीं पता इज़ AI अ बोन और अ कर्स और थ्रेट. लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, इंसानों ने मशीन को बनाया है, टूल्स को डेवलप किया है, टूल्स या मशीन्स ने इंसानों को नहीं. विद दिस पॉजिटिव नोट, इट्स टाइम टू से खुदा हाफिज़. सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज.